ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी, और जब उसके अंदर हमने एक कंडक्टिंग स्लैब रखी तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट हुआ, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट हुआ, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की जरूरत क्या हुई हमें, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों हम कॉम्बिनेशन करते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो कैपेसिटर है उसकी यूनिट होती है फेरेड। आपको ध्यान होगा फेरेड, और फेरेड जो यूनिट है ये लार्जेस्ट यूनिट है, लार्ज यूनिट है। इसलिए हमें इस बात का पता है कि जब कैसे पता लगा था कि जो फेरेड है ये लार्जेस्ट यूनिट है। हमने देखा था कि जब कोई भी कंडक्टर अगर अर्थ के इक्विवेलेंट साइज का हो जाए, यानी व्हेन कंडक्टर हैविंग द साइज इक्विवेलेंट टू अर्थ, देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी 711 माइक्रोफैरड। तो जब इतने बड़े साइज, इतने ह्यूज साइज का हमारा कंडक्टर है, तो भी उसकी जो कैपेसिटेंस है माइक्रो में है, 10⁻⁻⁶ में है। तो इसका मतलब है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी हम बेसिक बताएं, n1 u1 is equal to n2 u2, here n1 and n2 be the number, or we can say that magnitude, and u1 be the unit system। तो यहाँ से हमने इस बात का पता था कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है। अगर नंबर अगर आपका लार्ज है तो यूनिट सिस्टम स्मॉल होगा, और यूनिट सिस्टम अगर लार्ज है तो नंबर स्मॉल होगा। यहाँ आप देखिए क्या है, नंबर जो सिस्टम है नंबर स्मॉल है, नंबर क्या है आपका स्मॉल। तो इसका मतलब है कि यूनिट जो सिस्टम है वो आपका बहुत बड़ा होगा। तो इस बात से हमें प्रूफ होता है कि फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास छोटे छोटे कैपेसिटर हैं, ये भी हमारा C1 कैपेसिटर, ये C2, ये C3, बहुत सारे कैपेसिटर है हमारे पास। पैरेलल प्लेट भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि किसी भी साइज, शेप एंड साइज का हो तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस विल बी द सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस, वेदर इट मे बी पैरेलल प्लेट, मे बी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, बट रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। दिस इज द कैपेसिटर। When we get a different amount or different कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हमारे पास हो, और हम किसी सर्किट में ऐसा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहते हैं जो उनसे मैच नहीं करता हो। मान लीजिए, लेट अस सपोज ये 1 माइक्रोफैरड का है, ये भी हमारे पास 1 माइक्रोफैरड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरड के। देयर आर 3 कैपेसिटर ऑफ माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैरड, and we want a capacitor having the higher value, for example 2 microfarad, or we can say that 3 microfarad, or we maybe lower value 0.5 microfarad, etc. We need to prepare an electrical circuit having capacitance like this, but you have only the capacitor of these capacitance. Then how we can use this capacitor to get up this value? So we need the combination 2 or more capacitor is necessary to connect to get the net capacitance according to the electrical circuit. In electrical circuit, what is our requirement and what we have, that is the different situation. So we have different capacitance capacitor, and we need to these. So to fulfill these conditions, it is necessary to combine a large number of capacitor in different form. So here we generally discuss 2 type of combination, and first we discuss what is the basic difference between these and what will be the keyword for these combination, and after that we study. So there are 2 type of combination. First combination is series combination. Series combination. And second one is parallel combination. Parallel
combination. Basically, two type of combination: series combination and parallel combination. Here we discuss basically two things: series and parallel combination. The basic difference between them is, in case of series combination, basic formula of capacitor is Q is equal to CV. This is the basic formula we have used. Here Q is charge given to the capacitor. This is the charge and this is capacitance, and V be the potential. So there are three terms or three symbols we use here. Q stand for charge, C stand for capacitance of given capacitor, and V stand for potential. So in case of combination, there are two combinations, series and parallel. In case of series combination, first charge be same for all capacitor. If charge is same, then potential be different. Potential be different for these. Here, in this combination, potential across all capacitor be same. Potential mean potential difference. Potential difference and potential be same things. And second, charge be same and be different for different capacitor. This is the key word. Here, if a combination of charge capacitor is series, then charge is same, but potential be different. And in case of parallel combination, potential be same for all capacitor and charge is different. This is the key word we used here. By knowing this key word, we can easily solve these combination as like this. But we discuss one by one. First combination is series combination. We discuss here and find out the equivalent capacitance in this combination. We draw a structure. Let us consider three capacitor. This is first capacitor. This is second capacitor. And this is third capacitor. There are three capacitor, first, second, and third. They are connected with external circuit. Here a battery we use, or we can say cell use, and here key closed. This combination is like this. Three capacitor having capacitance as like this. This have the positive charge, this have negative charge plate, this plate have the positive charge, this is induced charge, negative induced charge, here is positive charge, and here is negative induced charge. This type of combination is series combination, in which first plate is this is second for first capacitor, this is first plate and second plate. This capacitor having capacitance C1, this have C2, and this have C3. And this voltage, this cell have the voltage V, and current passing through this circuit in this direction. From higher potential to lower potential, charge flow, or we can say that current flow. So in this combination, in series combination, it is important to note that first plate of C1 capacitor connect to the higher terminal, higher voltage of this cell, mean it is connected to the positive terminal, and second plate of first capacitor connect to first plate of second capacitor. This is the first plate of second, and this is the second plate of first. They are connected. Second plate of second capacitor connect to the first plate of third capacitor, and second plate of last capacitor connect to the lower terminal or negative terminal of the given voltage through the key. This type of combination is known as the series combination. In this condition, charge is same for all
We already discussed about this. This is the keyword. So this combination is series combination. We can say that first we explain series combination. Series combination. Let us consider three capacitor, first, second, and three. Here I will write, let us take three capacitor of capacitance, three capacitor of capacitance C1, C2, C3 are connected in series combination as shown in diagram, or series combination with cell of सेल और ब्रैकेट में बैटरी भी लिख सकते हैं, बैटरी ऑफ पोटेंशियल V as shown in diagram, as shown in diagram. ये हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है as shown in diagram. इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि तीन कैपेसिटर लिए जिनको हमने C1, C2 और C3 नाम दिया. दिस इज C3, सॉरी, दिस इज C3, और इनको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया या सेल से कनेक्ट किया है. किसके माध्यम से? की के माध्यम से. दिस इज की. Here the keyword is in this combination charge Q be same for all capacitor. This is the important keyword here. Then potential, we can say that potential difference, potential across each capacitor be V1, V2, V3 respectively. We consider that here is potential V1, here is potential V2, here is potential V3. It means that we take the different point as like this is the one capacitor point, this is second, and this is third. We can say that X, Y, M or N. So potential between X and Y is V1, potential between Y and M is V2, and potential between M and N is V3. These are the three potential as like V1, V2, V3, or we can say that these are the potential difference across the capacitor C1, C2 and C3. So by using the basic formula, hence we know that Q is equal to CV. Formula is Q is equal to CV. This is the basic formula. But here Q is same for all, only C and V are variable. So we separate these variable as we write this V is equal to Q upon C. We can represent V is equal to Q upon C. Why we write in this way? The basic reason for this is Q is same for all. So it is not a variable, it is a constant for all.
because its value is same for all. We have right here in red words. So variable are C and V. So C and V, we separate these two factors as V is equal to Q upon C. V and C are in reciprocal phenomena. So we can find out the individual potential. So for capacitor C1, for capacitor C1, potential is V1 is equal to charge is Q and capacitance is C1. Similar for सेकंड के लिए आप कैलकुलेट करोगे V2 is equal to Q upon C2 because charge is same. Charge do not change. Each and every capacitor contain equal amount of charge. And V3 is equal to Q upon C of 3. We can obtain this as like this relation between potential and capacitance of each capacitor. Finally, we get at ideal condition mean voltage of this battery never lost in any other form. Never lost in any other form. It means that this potential given to the capacitor only in the form of heating, in the form of sparking, there is no any loss of voltage or any loss of potential energy. So we can say that this potential is the provided potential, and V1, V2 and V3 with the potential of this capacitor and these voltage are obtained from this. So sum of these individual voltage must be equal to this voltage because there is no loss of any type of potential. So finally we say that at ideal condition, it means that अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो वैसे भी at ideal condition voltage never loss in any other form, like heat, sparking, etc. Only it be transferred to this capacitor. Then ideal condition में voltage of this cell equal to sum of individual voltage V1 plus V2 plus V of 3. This is the equivalent voltage. Because why these are equivalent? Because this potential divide into in 3 capacitor only. So we put the value and we get V is equal to this Q upon C is equal to, this is Q upon C1, this is Q upon C2, this is Q upon C of 3. We put value from here V1, V2 and V3. Q taken as common and cancel in both sides, and this be write as equivalent to as like this 1 upon C. This is equivalent capacitance. This is equivalent capacitance, and in case of series combination, so we use here symbol S. CS stand for the equivalent capacitance in series combination, and it is equal to, here is 1 upon C1, here is 1 upon C2, and here 1 upon C3. This is the final answer. This is the final answer. We write here, I will write here CSB equivalent capacitance in series combination.
series combination. This is series combination. And important things are, I will write here two important things as I will write here two important things about this. First, use. Why we use this combination? Here, value is very small as compared to individual capacitance. In case of numerical, we understand. Let us consider this first capacitor have the capacitance 2 microfarad. Second have the 5 microfarad, and third have the 10 microfarad. We consider that. Let us suppose, for example, these three capacitors having the capacitance, then equivalent capacitance between X and N terminal, mean equivalent capacitance of this circuit we can find out 1 upon Cs is equal to 1 upon 2 micro, 1 upon 5 micro plus 1 upon 10 micro. Take the LCM. LCM is 10 micro. It became 5 plus 2 plus 1. This is 11 plus 10 upon micro. This is the value of 1 upon Cs. But we find out the value of equivalent capacitance is Cs. So we reciprocal this. So Cs is equal to 10 upon 11 microfarad. And it is very important to note here, this value is less than 1. This value is approximately 0.9 microfarad due after this combination. But individual capacitor have the capacitance minimum value is 2 micro. The minimum value of individual capacitor is 2 microfarad, and answer is during combination 0.9. It is the lowest than the lowest capacitance. Mean we can say that capacitance after series combination is the lower than the least value of individual capacitance. इसका मीनिंग सिंपल सा ये हुआ कि हमने जो फाइनल रिजल्ट मिला है वो इस जो हमने कैपेसिटर को कंबाइन किया है उनमें सबसे छोटा जो है जिसकी सबसे कम वैल्यू है उससे भी छोटा आंसर मिलता है. अगर हमें कॉम्बिनेशन ऐसा हमें अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में लो कैपेसिटेंस चाहिए तो हम इसका यूज करेंगे. पहला यूज समझ में आ गया होगा. टू गेट lowest or less capacitance, to get less capacitance in circuit, in CKT stand for circuit, we use series combination. This is very important things. सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज होगा जब हमें सर्किट में लिस्ट और लेस कैपेसिटेंस चाहिए, लोअर वैल्यू चाहिए. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए ये है रेसिप्रोकल CS का और ये सारे रेसिप्रोकल हैं. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि CS का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है. तो हम ये भी कह सकते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं हम, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. Reciprocal of equivalent capacitance is equal to sum of reciprocal of individual capacitance of capacitor, individual capacitor.
we'll explain this. Or third is equivalent capacitance. Equivalent capacitance. Capacitance B smaller than the smallest, smaller than the smallest capacitance of capacitor in combination. In combination. These are the some important things related to this chapter or this topic. It is very important topic in series combination, how we can explain what will be the formula, and I explain here after find out the result we obtain when by CS and we want to get CS. So finally it reciprocal and it is answer this. अक्सर हम ऐसी गलती कर सकते हैं कि हम ये सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा हो, फॉर्मूले में रख के एलसीएम लेके हम इतना आंसर छोड़ सकते हैं जो गलत होगा। लास्ट में आके आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही होगा। इससे इंपॉर्टेंट क्या है, यूज क्या है? पहला यूज ये है कि किसी भी सर्किट में आपको कैपेसिटर दे रखे हैं और आपको कैपेसिटेंस कम चाहिए, least capacitance or less capacitance in circuit we use series combination. सेकेंड बात बताई कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिप्रोकल, एंड फाइनल इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज smaller than the smallest capacitance of capacitor in combination. इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा होगा उससे भी हमारा छोटा आंसर होगा। इतनी बातें हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थी। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। अब देखिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है, यहाँ बना देता हूं मैं। ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है, ये आपका सेकंड कैपेसिटर ले लो, ये आपका सेकंड कैपेसिटर है, ये आपका थर्ड कैपेसिटर है। हमने 3 कैपेसिटर लिए यहाँ। इन तीनों को हमने एक सर्किट से कनेक्ट करना है। आप चाहें तो डायग्राम कैसा भी बना सकते हैं, ये तो जस्ट वायर है रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप वायर की शेप कैसे भी ले सकते हैं। ये हमने 3 कैपेसिटर हैं, इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करना है। बैटरी से कह लो, सेल से कह लो, ये हमने कनेक्ट करना है एक की के थ्रू। ये कंट्रोल करेगी की, और यहाँ हम एक बैटरी और सेल कुछ भी कहो आप, उसका यूज कर लेंगे। इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बनाया। इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। इनके इस टर्मिनल पे आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पार्ट से जुड़ा हुआ है, हाई पोटेंशियल पार्ट से, और इधर इस पे नेगेटिव चार्ज। ये इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है आपके। ये हमने ये पॉइंट एक्स पॉइंट मान लो, इसको वाई मान लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और चार्ज का फ्लो जो होगा इसमें वो आपका आप देख सकते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये फर्स्ट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है। ये सेकंड वाला इसकी कैपेसिटेंस C2 है। ये थर्ड वाला इसकी कैपेसिटेंस C3 है। There are 3 capacitor C1, C2 and C3 are connected in parallel combination as first plate of all capacitor. This is the first plate of this. This is first plate of this. This is first plate of this. First plate of all capacitor connect to the high voltage terminal of this cell, and this battery or cell have the voltage V.
This is voltage V. And second plate of each capacitor, or we can say that second plate of all capacitor connect to the lower potential terminal of this voltage V. Ab, in this combination, all first or all second plate are connected between the same terminal, same voltage. This battery or this cell direct connect to this capacitor. This also direct connect to this. This also direct connect to this. It means that this cell or this battery provide same potential for all. So due to this potential difference is same for this. This potential is same for this. This potential is same for this. Mean potential remains same, but only difference in charge. So this have different value of charge. This have different value of charge. This have different value of charge. We consider this have the charge Q1. This have charge Q2, and this capacitor have charge Q3. Finally, this total charge provided by this is Q. We can say that. This is the diagram in parallel combination. We write here this language as let us take three capacitor of capacitance C1, C2, C3 are connected to a cell or battery of voltage V in parallel combination. Parallel combination as shown in diagram. हमने डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर दिया. इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे हम यहाँ? वही इंपॉर्टेंट बात, potential difference is same for all capacitor in parallel combination. Potential is same for all in this combination, but charge flow in different amount as Q1, Q2, Q3 be charge passing through or charge for capacitor C1, C2, C3 respectively. Charge be different for different by using formula. Formula is basic formula is Q is equal to CV. This is basic formula. Here three factor. First is Q, second C, and third is V. Q is charge, C is capacitance, and V is potential. In this combination, potential be same for all,
all capacitor are connected with the same potential difference. So V is same, only Q and C are different and they are separated by the equal sign. So we use this formula. In this combination, Q be the total charge in this circuit. C, S, we write here, this is CP. Here, CP, we represent capacitance, or we can say that equivalent capacitance. Equivalent capacitance इन सर्किट. इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमने सीपी से लिख दिया. फॉर फर्स्ट, फॉर कैपेसिटर C1, C1 कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर है? Q1. फॉर्मूला इसकी कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1. सिमिलर, और यू कैन राइट कैपेसिटर C2. C2 के लिए क्या हो जाएगा? Q2 इज इक्वल टू C2V. और कैपेसिटर C3 क्या हो जाएगा? Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V. सेम मेथड रहेगा क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है सबके लिए, चार्ज डिफरेंट है और उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंस है, वो हमने लिख ली. अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फॉर आइडियल कंडीशन, फॉर आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन मीन there is no loss of charge in any form. It means that charge provided by this battery or this cell is Q, and this Q redistribute over these, and it can be distributed in three capacitors C1, C2 and C3, but there is no loss and no leakage of charge take place here. Then condition is, which condition obey here? Q is equal to this charge spread over Q1, Q2 and Q3. This equation is valid for ideal condition if only charge given to these three capacitor, its amount may be different. This capacitance may have large value of charge, this may have small, and this may have intermediate value. It does not mean, because storage power depend on their capacitance. As capacitance different, then storage power of charge is different under the same potential. Put value from here, this Q is equal to this, and this is equivalent CPV, and this became C1V, C2V or C3V. We take the common and cancel both sides, and finally answer is CP is equal to C1 plus C2 plus C of 3. This is the answer. This is the combination of this capacitor. This is answer. Here we note that the sum point is here. CP is equivalent capacitance between X and Y point. This is the X and this is Y point. This circuit have equivalent capacitance is CP, and this CP is equal to algebraic sum of C1 plus C2 plus C3, because there are three capacitor, and we directly add these three capacitor or capacitance of these capacitor directly we add, then we get the equivalent capacitance. So we write important things about this as, we write here important things as like this. First you understand with numerical, similar like the last, the first capacitor have 2 microfarad. I will write into red pen. This is only the numerical purpose. First is 2 microfarad, second is 5 microfarad, and third is 10 microfarad. We consider there are three capacitors having capacitance this and this. In this combination, net capacitance is linear sum of these 2 micro plus 5 micro plus 10 micro
farad is equal to 10 5 or 2 is 17 microfarad. Answer is 17. And in all these, the largest value of capacitance is 10, and answer is greater than 10. It means that in parallel combination, we see that net capacitance or equivalent capacitance be the largest as compared to the large value of individual capacitor. It is the larger value. So we write use. First we write here use of this combination. We have the 3 or more capacitor having capacitance low, and we want to get the high capacitance in circuit. We use this combination. So we write here, first use is to obtain large capacitance in circuit. We use parallel combination. It is important. We want to get the large value of capacitance, or we need a large capacitance capacitor in the circuit. Then we use the series combination. We add 2 or more capacitor of small capacitance to get up the high capacitance in the circuit. Second important thing is this is first important. Second is the current capacitance Cp is direct sum of these. So we can say that equivalent capacitance of this combination of equivalent capacitance in parallel combination be equal to sum of, or we can say that algebraic sum of capacitance of individual capacitor. And third one is equivalent capacitance is greater than equivalent capacitance is greater than the largest capacitance of individual capacitor. ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है. फर्स्ट है इसका यूज कहाँ करते हैं. इस कॉम्बिनेशन का यूज हम कहाँ करेंगे, जहां हमें लार्ज कैपेसिटेंस की जरूरत होगी. सेकंड, ये क्वेश्चन हो सकता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसके बराबर होती है, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. और थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आंसर आएगा हमारा, वो इंडिविजुअल कैपेसिटर में जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी. ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी. ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस है. और ये हमने 2 टॉपिक इसके अंदर पढ़ने की कोशिश की है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन. देखिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल लिखे हैं यहाँ पे, मैं इन न्यूमेरिकल को समझाऊंगा. आप लोग सिर्फ इनके आंसर निकालने तक फोकस न रखें, आपको इसके कंसेप्ट को समझना है कि हमें कैसे अप्लाई करना है. मैंने सिर्फ डायग्राम को चेंज करके यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और मैंने ऊपर एक जर्नल वैल्यू लिख दी
न्यूमेरिकल है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है हमें, और ऐसे आपको डायग्राम दिए, हमें इनको सोल्व करना है। आप यहाँ ऐसा दिमाग से निकाल दें कि आपको इनके आंसर निकालने हैं, आपको इनका कंसेप्ट समझना है, इसलिए ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम इनको हैंडल कर सकते हैं। हम धीरे धीरे इजी टू हार्ड चलेंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कैपेसिटर के सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसके न्यूमेरिकल में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इससे। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये अच्छे लगते हैं या नहीं। देखिए, हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं यहाँ आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम फर्स्ट वाला लेते हैं। यहाँ कहता है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपका डायग्राम है फर्स्ट वाला, ये क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। यहाँ देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है आपका, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये ए है, ये बी है, ये 2 माइक्रोफैरड का और ये भी 2 माइक्रोफैरड का। ए से बी टर्मिनल पे आप जब जाएंगे तो कितने रास्ते मिले आपको? केवल एक ही रास्ता है कि ए से बी जाने का केवल एक ही वे है, और एक ही रास्ते पे जितने भी कैपेसिटर होंगे वो सारे कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये को किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में। हमने पहचान में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान होगा 1/c। ए बी के बीच निकालना है, मैंने ए बी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सी लिख दो सिर्फ। तो क्या होता है 1/2 माइक्रोफैरड प्लस 1/2 माइक्रोफैरड। सोल्व करेंगे तो 2 माइक्रोफैरड इसका एलसीएम, 1 + 1 2/2 माइक्रोफैरड, यानी 1/1 माइक्रोफैरड। ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में आंसर आने के बाद उसको पलटना होता है। सी ए बी किसके बराबर हो गया? 1 माइक्रोफैरड। ये पहले का आंसर है। सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि आपका कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर आपको जब ये पता लग गया कि ये सीरीज या पैरेलल है तो इजीली हमें फॉर्मूला लगाना है। मैं सेकंड क्वेश्चन को यहां समझा देता हूं। मैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन को लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आपको ऐसे दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन, एक इधर कैपेसिटर है और एक इस साइड में कैपेसिटर है। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ये भी 2 माइक्रो का है और ये भी 2 माइक्रोफैरड का है। ए से बी पर आपको जाना है, यानी बिटवीन ए एंड बी नंबर ऑफ वे कितने हैं? ए से बी आप ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी। 2 रास्ते हैं, इसका मतलब दोनों रास्तों पर एक रास्ते पे जितने मिले वो सीरीज में, और अलग अलग रास्ते होते हैं वो पैरेलल में। ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया आपका? आपको पहचान में आ गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी ए बी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C1 + C2, 2 माइक्रो प्लस 2 माइक्रो, कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरड। बिल्कुल आसान सा आंसर था इसका। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन को लेके आता हूं मैं, आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, और मैं अब इसको हटा देता हूं। 2 क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिए, मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाता हूँ। ये आपने क्लियर कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, मैं यहाँ लेता हूँ थर्ड क्वेश्चन को। यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और यहाँ फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ये आपका 2 माइक्रो का है, ये 1 माइक्रो का, ये 1 माइक्रो का, और ये फिर 2 माइक्रो का है। इस तरीके से लगे हुए। आप इस डायग्राम को ए से बी जाएंगे तो आप ए से चले यहाँ आगे, यहाँ आने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, इसका मतलब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल में। फिर आगे चलेंगे, इन दोनों को पार करके फिर एक और मिलेगा। तो अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका डायग्राम ऐसा भी तो बना सकते हैं। ये पॉइंट ए है, यहां से चले आप, एक मिला, इन दोनों को सोल्व कर लो। ये किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब इन दोनों को पहले सोल्व करोगे तो एक आंसर निकलेगा। वो आंसर होगा, वो एक कैपेसिटर होगा, उसको यहाँ रख दिया, और ये तीसरा यहाँ है ही।
ये बी पॉइंट हो जाए, ये 2 माइक्रो का है, ये 2 माइक्रो का है, और इसको हमने इसको सोल्व करना है। पहले मैं यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व कर लेता हूँ, इस कॉम्बिनेशन को। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। ये भी 1 माइक्रो का, ये भी 1 का, 1 + 1 कितना हो गया, 2 माइक्रो फेरेड। 1 माइक्रो सॉरी 1 माइक्रो + 1 माइक्रो इज इक्वल टू 2 माइक्रो। ये कैपेसिटर कितने का होगा, 2 का। अब ए से बी देखिए आपको जाना है, कितने कैपेसिटर हैं, तीनों एक ही लाइन में है। इसका मतलब ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। देखो कैसे सोल्व करना, पहले एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सोल्व होगा पार्ट, ये होने के बाद ऐसा मिलेगा आपको, फिर आपको ये सीरीज में होगा। तो सीरीज में आंसर कैसे निकालते हैं, CAB इज इक्वल टू 1/1, 1/2 और 1/3। एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, 2 माइक्रो। 1 + 1 + 1 3/2 माइक्रो। माइक्रो नीचे है ये, मैंने कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आंसर निकालने तो पलट के आंसर लिखना होगा। तो CAB क्या हो जाएगा आपका, 2/3 माइक्रो फेरेड। ये इस तरीके से आपको सोल्व करना था। देखिए पहले हमने बिल्कुल इजी पढ़ा, उसके बाद दूसरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का इजी पढ़ा। अब मिक्स कॉम्बिनेशन आ गया, वहां मिक्स कॉम्बिनेशन आया तो हमें कैसे सोल्व करना है, ए और बी के बीच निकालना था। ये ऐसे का ऐसा है, ये ऐसे का ऐसा, इसको हमने सोल्व किया पहले। और ये पहले किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लिया। पता लग गया कि इन दोनों को जब हम सोल्व करते हैं तो कितने का बन जाएगा, ये इनका आंसर है 2। ये भी 2 का होगा। ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे हम सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर कितना हो गया, 2/3। आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 4 नंबर वाला, कि 4 नंबर को हम कैसे सोल्व करेंगे। इस कॉम्बिनेशन ए यहाँ है, बी यहाँ है। तो देखिए ये ऐसा डायग्राम है, अगर आप इसको देखें, ये ए है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ है, और एक इस साइड पे है, और ये आपका बी पॉइंट है। ए से बी पे जाना आपको, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज हैं ए से बी जाने का। एक तो ये रास्ता है और एक आपका ये रास्ता है। पहले ऊपर वाले रास्ते पे देखो, एक से ज्यादा आते हैं या नहीं, बिल्कुल। इस रास्ते पे ये और ये दोनों हैं, तो ये कितने का है, ये 2 माइक्रो का, ये भी 2 माइक्रो का है। तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, दोनों एक ही लाइन में आए हैं। तो ये ऊपर वाला भाग है, इन दोनों को मिलाने से ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और नीचे वाले दोनों को मिलाओगे, ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट है। जब इधर वाले दोनों को सोल्व करोगे तो एक आएगा इसमें आंसर कोई। हमने ऐसे मान लीजिए इसको सोल्व कर लिया, ये एक ही बन गया यहाँ पे बी। और इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये भी एक ही बनेगा, ऐसे इस तरीके से। अब सोल्व करता हूं पहले मैं, एक इस कॉम्बिनेशन में है, पहले इसका सीरीज कॉम्बिनेशन सोल्व करो, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/CS क्या होता है, 1/2 माइक्रो + 1/2 माइक्रो। एलसीएम ले लो, 2 माइक्रो, ऊपर आ गया 1 + 1 कितना हो गया, 2/2 माइक्रो। ध्यान रखना 2/2 1 आंसर हो गया, 1 नहीं होगा, पहले इसको पलटेंगे। CS कितना हो गया, 1 माइक्रो फेरेड। ये दोनों एक जैसे थे, इनका आंसर हो गया 1 माइक्रो फेरेड। और ये दोनों भी एक जैसे थे, ये भी 2 का था, ये भी 2 का था, तो ये भी कितना हो गया, 1 माइक्रो फेरेड। यहां तक आ गया, समझ में आ रही है ना बात। पहले इन दोनों को सोल्व किया, फिर इन दोनों को सोल्व किया। इन दोनों को सोल्व किया तो 1 माइक्रो का मिला, इधर वाले दोनों को सोल्व करोगे तो 1 माइक्रो का। अब ए और बी के बीच देखो 2 रास्ते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ए है, ये बी है। इसको लिखने का ऐसा भी तरीका है आपके पास, क्योंकि ये तो वायर हैं, इनको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही करो, ए बी को कैपेसिटर ऐसे ही रखने। ये और ये एक ही चीज है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान दो। और सेकंड क्वेश्चन पैरेलल था, ये 1 का है, ये भी 1 का है, तो CAB किसके बराबर हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जोड़ते हैं, 2 माइक्रो फेरेड हो जाएगा। 1 माइक्रो + 1 माइक्रो, तो कितना आंसर हो गया हमारा, 2 माइक्रो फेरेड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने इसमें 4 क्वेश्चन कर लिए और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर मैं नेक्स्ट 5 और 6 को और बताता हूं। अब मैं, आप अगर क्वेश्चन को ढंग से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे देखने में एक बार ऐसे लगेंगे एक जैसी चीजें हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर मिलेगा। और वहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बच्चे रटने की प्रवृत्ति रखते हैं, समझने की प्रवृत्ति नहीं रखते, तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए आपको समझना है। ये और ये दिख आपको स्केयर रहे हैं, और इसमें भी 4 कैपेसिटर हैं, इसमें भी 4 कैपेसिटर हैं, लेकिन ए और बी पॉइंट चेंज हैं। यहाँ ए से बी ये पॉइंट था तो 2 ऊपर थे 2 नीचे, यहाँ बी पॉइंट ये है, ऊपर 1 और नीचे कितने हैं 3। ये बात आप ध्यान रखनी है स्ट्रक्चर में। मैं यहाँ बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरीके से है। इसको समझने की कोशिश करना और फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, और ये भी 2 का। ए से बी पे जाना, यहाँ तो 1 आया है, तो इसका डायग्राम ऐसे नहीं बन जाएगा क्या? ये ए है, इस रास्ते पे 1 था 2 माइक्रो का, और इधर से जाओगे तो आपको कितने मिल रहे हैं 3। ये तीनों किसमें है सीरीज में, और जब तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे तो एक ही कैपेसिटर बनेगा। वो आंसर तो एक ही आएगा ना। पहले इस सीरीज को सोल्व कर लो। सी एस फॉर्मूला होता है 1/CS। 2 2 और 2 सारे 2 के हैं, 2 माइक्रो 2 माइक्रो 2 माइक्रो, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1/2 माइक्रो। एलसीएम सेम हो जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 3/2 माइक्रो, और पलट देंगे तो कितना हो गया 2/3 माइक्रो फेरेड। ये माइक्रो ऊपर चला गया, अब 2 के साथ 2/3 माइक्रो फेरेड। यानी जब हमने इन तीनों को सोल्व किया सीरीज में तो हमारा आंसर ये हो गया। तो नीचे वाला कितने का हो गया 2/3 माइक्रो फेरेड का। अब ये आप क्वेश्चन नंबर 2 से चेक कर सकते हो, वैसे का वैसा है, वैल्यू अलग है। तो अब सी ए बी क्या हो जाएगा? ये कौन सा कॉम्बिनेशन? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सी ए बी किसके बराबर हो जाएगा 2 + 2/3 माइक्रो। ये भी माइक्रो में है, तो एलसीएम 3 2 6 8 8/3 माइक्रो फेरेड। ये इसका आंसर हो। देखो आंसरों में डिफरेंस है दोनों के। उसका आंसर 2 माइक्रो फेरेड आया, इसका 8/3 माइक्रो फेरेड आया। इसका कारण है कि कॉम्बिनेशन से इफेक्ट पड़ता है। ये क्लियर हो जाएगी ये बात। ऐसे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। स्ट्रक्चर देख के अंदाजा नहीं लगाना, हमें ये देखना किस पॉइंट के बीच में हम निकाल रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगुलर शेप दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6। आप देखेंगे ये इस तरीके से है, ये ए पॉइंट है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक इस साइड पे है ट्रायंगल के, और एक इस साइड पे है ट्रायंगल के, बी है, ऐसे दिए हुए। अगर इसको आप ढंग से देख लें तो ये ऐसा नहीं बन रहा क्या? ये ए पॉइंट है, यहाँ एक आया हुआ है, और ऊपर वाले लाइन में कितने हैं 2। ये दोनों के दोनों किस में है सीरीज में। और सीरीज का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? सी एस 1/this 1/this, दोनों 1 1 के हैं, 1/1 माइक्रो 1/1 माइक्रो, तो 1 एलसीएम हो गया, और 1 + 1 कितना हो गया 2/1 माइक्रो, 2/1 माइक्रो, यही बनेगा एलसीएम। और सीरीज में है तो पलटेंगे, सी एस क्या हो जाएगा पलटोगे तो 1/2 माइक्रो फेरेड। कितने का कैपेसिटर? इन ऊपर वालों का सॉल्यूशन। और ये तो ऐसे ही लेना आपको, तो यहाँ एक आएगा क्योंकि ये सीरीज का ऊपर आ गया। नीचे वाला कितने का 1 माइक्रो का, और ऊपर वाला कितना आया 1/2 माइक्रो का। कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट सम करते हैं, 1 माइक्रो + 1/2 माइक्रो, दोनों को जोड़ोगे तो 3/2 माइक्रो फेरेड आंसर हो जाएगा। ये हमारे इस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन का आइडिया दिया है कि आपका माइंड कैसे काम करे, आप क्रिएटिव तरीके से कैसे सोचें, किस तरीके से हमें इनको सोल्व करना है। आप इसके कितने भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर किसी को न्यूमेरिकल कोई ऐसा न्यूमेरिकल लगे कि आपको समझ नहीं आए, तो आप मेरे YouTube चैनल पे नीचे चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दें, ये मैं आपको उसका सॉल्यूशन और उसको हल करके उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।
ये हमारा टॉपिक था और मैं अब इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। ओके, धन्यवाद।